in the domain of foreign affairs, that is always an edge in any case. What do you cook? Ma'am, not in that particular sense that I cook in specific dishes, but I usually do when I go to home or when I'm free. I usually cook the Pakistani food, especially the biryani and all those things which I like to eat. So you cook what you like to eat. Yes, exactly. Do you think that cooking has contributed to deterioration of the environment in the world since human beings started cooking? Ma'am, it has, but that is the basic fundamental thing for our survival as well. So sometimes we need to do cost-benefit analysis. For survival, I think cooking is very important, but there are other things which are basically contributing the environmental degradation. So do you think hunter-gatherers were not surviving? They were surviving, but they were not living. So with the changing circumstances, we have to also adopt it to the changing circumstances. Okay, thank you very much, Dr. Saab. Adil, how many times you appear before this panel? Sir, I think this is my third time. Okay, it is stated that American Constitution is the manifestation of Age of Enlightenment. Comment. Now, somehow, because the basic structure of that constitution lies within the fundamental rights. And if we look at to the phase of enlightenment, there was the basic, the rise basically lands in the fact that we need the right to life, we need right to liberty, and especially the private property. So that the shift from the monarchical powers to the somehow the popular sovereignty, because it starts, the preamble of US Constitution starts with the fact that we, the people of US. So that reflects this particular notion. Keep in mind about the political philosophy of John Locke and answer me the question related to why there is the need for upper house in the parliament, despite usually people says answer in the form that there should be uniformity. What answers you would give apart from this answer? Sir, I think upper house is the need because there is always, if we look at the composition of different houses in the various political systems, for example, in Pakistan, we see that the Senate is something representing the technocrats. It has some quota for the provincial representations and some special seats. In the similar way, when we go to the House of Lords, there are some representation. We can go to the Senate of US, where we see that they are representing, every two member is representing every state within. On the other hand, in the lower houses, we see the elected. So I think on one hand, if we need those who are being elected, we also need technocrats, we also need other tiers of the society to engulf within. So in this way, I think on one hand, the lawmaking would be efficient, and the other hand, people will also feel inclusive and participatory, which is also the need of today's parliamentary systems and as well as the presidential system and for the effective governance system. Do you think Code Napoleon had some impact on making of Indian Penal Code? There were a number of impacts, but I cannot explain that for the timing because I haven't that much dig down into the particular thing. What major change happened after War of Buxar in India? I don't have any idea. I'll look into it afterwards. Okay, when civil services began to establish in subcontinent? It was after the arrival of basically the establishment of, I think, the Government of India Act of 1858. Afterwards, there was a need from the side of the Queen that we need to establish some bureaucratic setup in this. So there was, sir, as far as I remember, have you heard about Cornwallis Code? No, sir, I haven't. I'll look into it afterwards. Okay. Tell what is the significance of Montagu-Chelmsford reforms toward the making of Indian Constitution? I don't know. I'll look into it afterwards. Okay, my last question. You talk about principles of state policy. Yes, sir. In Constitution of Pakistan, do you know that from which constitution we took idea to incorporate this principle of state policy in Constitution of Pakistan? Sir, I don't have any idea about it. I'll look into it. Thank you. Chale, let's conclude it. Now you tell me, you are here coming to us, this is the third time.
Do you think these mock interviews are helping? So definitely, sir, they are helping a lot. Specifically, when a candidate comes here, so आपको एक basic अपना idea होता है कि where are you standing, and moreover it gives you, for example, last time I appeared for my PMS mock interviews. So when I came there और उधर मैं गया और बिल्कुल फ्रेंड उनके सामने, so I felt something कि कोई alien चीज़ नहीं है, I've gone through it sometime. It was the same thing. It was almost the same thing. तो Environment ऐसे ही लगे. Almost इसी तरह, और specific बस वो same factor है. Plus जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो टाइम टू टाइम दीज मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता चलता है कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पे खड़े हैं. और इफ अ कैंडिडेट एक्चुअली नोज कि वो क्या इंटरव्यू दे रहा है, तो ही वुड नो कि यार उसका कौन सा एरिया अभी जरा लैग कर रहा है और उसको कहाँ पे काम करने की जरूरत है. You have all personality, intelligence, communication skill, confidence, sitting posture, all fine. ठीक है. अब now you have already made it to the PMS, which is a very tough competition than the federal government. Let me tell you. The point is, expectation बढ़ गई है तुमसे अब. Exactly. ठीक है ना. Expectation बढ़ गई है. मैं तुम्हें उस स्केल पे देख रहा था. तो उसमें ये आई थिंक यू नीड टू वर्क हार्ड. एक तो अपना जो ट्रेनिंग पार्ट है, इसके मॉड्यूल्स के बारे में जो कंटेंट्स होते हैं ना जैसे चैप्टर के, तो उनको देख के यू मस्ट हैव क्लैरिटी कि दिस इज द कंटेंट्स. अब प्रोविंस के बारे में यू मस्ट नो मोर. पॉलिटिकल हायरार्की, सूबाई असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, पार्लियामेंट्री कमेटीज, जो कमेटी, यू मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. फोकस करो नोटबुक पे, पॉइंट्स बनाओ. पहले भी कहा होगा आपको, 1 2 3 4 पॉइंट्स, उन्हीं को आपने न्यूज़पेपर अपडेट करें. जो पिछले कब के इंटरव्यू? सर मेरा 6th को, तो यू हैव गॉट 15 दिन है ना. Yes, sir. तो न्यूज़पेपर को एक ले लो, न्यूज़पेपर कोई ले लो, उसकी इंटरनेशनल G20 समिट है, चाइना का समिट हो गया है, ठीक है ना, हमास वार है, हम उसको नहीं छेड़े बिकॉज यू आर इन टच विद दोज थिंग्स. तो यू नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि मसला ये है कि तुम चाह रहे हो कि मुझे नंबर ज़्यादा दो. तुम्हारा और कोई इशू नहीं है. यू वांट टू बी इन द DMG, डेफिनेटली तुम्हारी प्रायोरिटी यही है. तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. मार्किंग जो है वो फिर मैं बताता हूँ. ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, इसमें आप नॉलेज गैप है, बहुत नॉलेज गैप है. फिर आप ये जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जो लिखते हैं, इसमें देखें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ ना हो. या इसमें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने अपनी वीकनेसेस लिखी है, जो कि आपकी यहाँ जो आपने लिखी है वो उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है. डिटर्मिनेशन है, ओवर ईटिंग, ठीक है. लामहला सवाल आता है ना, इफ यू ओवर ईट यू थिंक इट इज नॉट गुड, यू से यू आर डिटर्मिन्ड. सो इफ यू आर डिटर्मिन्ड यू शुड you should improve on it. You should eat less if you are determined, जो कि नहीं है. मेहनत करो, कोशिश करो. आप ऑलरेडी PMS में हैं, ठीक है. Adil, you have a good personality. You're well dressed. What you present here is really your winning or losing advantage or disadvantage. You say that you have done jurisprudence, international law, constitutional law. It is expected that you know more about law. अब आपने you flaunted because you thought कि अगले को नहीं पता होगा treaties के बारे में. Once you do that, then the panel will become aggressive because they know and they'll catch you on it. And it will put you on a weak wicket. Don't flaunt something that you can't defend. Authorization के ऊपर पढ़ो कि किसको authorization किस तरह से होती है. It's not as simple कि थर्ड सेक्रेटरी को गवर्नमेंट authorization देगी. हो नहीं सकता. जब तक कि सारी एम्बेसी खाली हो जाए और थर्ड सेक्रेटरी CDA हो, फिर शायद उसको मिल जाए. Otherwise नहीं हो सकता. So have a better understanding of what the foreign service is. You have about 15 days.
do study all the international cases that Pakistan has won or lost, whether it is Gulbashan Yadav का केस हो, रिको डिक का केस हो, और जितने आपके हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इन सब पे आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपको, बिकॉज दिस इज योर लास्ट चांस, सो यू हैव टू रियली बी प्रिपेयर्ड। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन सब्जेक्ट्स पे जो आपने यहाँ लिखा है उसके ऊपर कम से कम अबूर होना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से। फेवरेट पर्सनालिटीज़ भी अमजद साकिब ठीक है, हदीका कियानी अब क्यों पसंद है, you like her voice, does she do any philanthropic work, क्या है, जो भी शख्सियत लिखो उसके ऊपर थॉरो नॉलेज रखो, क्योंकि उस पे लोग आपको सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह कुकिंग पे अब यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि जी अगला ये सवाल शुरू कर देगा, लेकिन पैनलिस्ट आपको उधर से एनवायरनमेंट पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ये जितनी इधर चीज़ें थोड़ी लिखो, बैडमिंटन चैम्पियन कौन है, लास्ट मैच कहाँ हुआ था इंटरनेशनल, किसने जीता था, क्या स्कोर था, इसी तरह मतलब पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक तो अपने आप को जितना लिमिट करो बेहतर है, जो शख्सियात लिखो एक ही लिखो तो बेहतर है, पर उसकी फिर थॉरो नॉलेज हो, ठीक है। अदर देन दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जस्ट फोकस ऑन इट, and you should not come out as somebody who's trying to impress. You should come out as somebody who is impressive. Okay? Wish you all the best. हाँ, आदिल सर ने भी कहा था कि एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। आई नो, तो अब आपने जिस तरह क्वेश्चन बहुत सारे जो मिस किए हैं ना, शायद मुझे लगा कि कहीं आप रिलैक्स कर गए कि अब इंटरव्यूज आपने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वो चीज़ जो है ना, देखिए ना आप कायदे से यूनिवर्सिटी से हैं, फिर पीएमएस आपने क्लियर किया हुआ, तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई होंगे। एंड व्हेन कंपेयरिंग कि कोई स्टूडेंट आया बलूचिस्तान के खारान से आया, उसके बारे में रवैया जो होगा वो डिफरेंट होगा, आपके बारे में डिफरेंट होगा। तो आप इन चीज़ों को देखिए, लॉ से रिलेटेड है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, पाकिस्तान स्टडी की चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। लॉ की बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है इसी तरह की चीज़ें फिर आपके सामने आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।